All of you. I am Dr. Anurag Agrawal, Professor in English, and this is OSN Academy of English since 1998. What happened today, students, that many students were of the opinion that, sir, we are very busy in the daytime, so is it not possible to see you live on the channel so that we may be able to notice and enjoy that what is live classes, because we also want to be a part of your system, sir. So please, it is our request that please come live in the late evening time so that all those married ladies, all those students, all those girls, boys who are at various jobs anywhere, they may be able to relax themselves and enjoy this class. So on the request, for the first time, I am live here at such a moment of time when my office actually closes at 6 o'clock. So I am thankful to all my staff members who have cooperated me, for all of you students. And today's students, I have taken a very important topic right from the students of BA Part 1 up to the IAS students, and that is known as practical criticism. And after this practical criticism, a brief approach towards it, I will also be giving you guidance for rhetoric. So what are these two important terminologies? What are these two important points of discussion for a literature scholar to understand and fulfill the need of the understanding of these chapters of this thing, so that you can proceed to understand any part of the poem or even criticize or even comment upon. Unless and until you don't know the art of practical criticism, you are not able to assess this. And students, whenever you are going to face interviews in life, you are giving a chalk and duster or a pen and a duster, and in the interviews you are said that this is a poem, now go and teach it, we will assess you. So practical criticism, if you have the command, you have certain weapons with you, that how in a very first extempore lecture, suppose if you see 4 lines, 8 lines of any poem, how will you make out that what is to be taught, how to deal with that poem once you don't know that poet or any lines. So for that, students, if you are an aspirant of UGC NET also, or even for BA, MA, IAS, PCS, there are known as RTC, reference to context. You must have known and writing in your examinations. But once I am going to teach you this thing, I am 100% sure your level of skill will improve. So let us start. Rinki, good evening. Sujata, good evening all of you. So more and more students will come and I will be answering all your questions. If you have any doubts regarding anything, please be here with proper concentration, and don't leave this class till I finish the entire session, because after this I will be going to give you certain points about rhetoric. So what is practical criticism, students? First of all, for understanding this term practical criticism, you have to notice the poem's form. The poem's form, and what is the length of the poem. And any student who gets this form and the length of this poem anywhere in the question paper or anywhere, you should try to read, and you have to read it again and read it intuitively and in a very emotional manner. You have to get attached to that poetry or that lines. At least try to go through it 2 times. Minimum you have to go 2 times, and particularly keeping in mind the various patterns. You have to keep in mind the various themes. The diction का मतलब होता है किस प्रकार के words लिखा है, the choice of the words, the mood of the poem, the rhyming scheme, ABBA, ABCA, ABCD, something like this, and so many other things at a glance. Why? Because you have shortage of time. So at a glance, once you have a lot of things in your background, in your subconscious, which I am going to teach you, and in order to feel the flow of the poem or the passage, उस passage की फील को पकड़ने के लिए, उसकी फील को समझने के लिए, the poem should be reread. इसीलिए मैंने आपको अर्लियर बताया that every poem has to be read 2 times. And yes, we have to be careful in determining as to how many persons are appearing in that poem.
For example, there is a poem where you find, okay, this is a poem about a brother and a sister. This is a poem about where there are a boy and a girl having some love relationships. This is a poem about a father and a son. As if, suppose if I take the example of a poem Ulysses by Tennyson. Once you read that poem starting, you feel that yes, there is a person Ulysses, and then inside you have his son Telemachus, then his wife, aged wife. So there are two or three persons. In the same way, I am trying to make you understand that we have to carefully determine as to how many personae appear in that poem. What part do they take in making the poem proceed? इन लोगों का क्या रोल है उस पोएट्री को आगे बढ़ाने का? For example, there is a minor character. He has less role to make the poem get apart. And there are other characters also जिसके वजह से वो poem proceed कर रही है. And a very important aspect which should be taken into consideration is the relationship between characters. There are so many characters. Sometimes it is a monologue, sometimes it is a dialogue, sometimes more people are there. So you have to make it out कि इन relationships में क्या है, मतलब उनका जो character है, 2, 3, 4 आपस में वो क्या relationship लेके चल रहे हैं. And what is the setting of the time? उस समय सूरज उगा हुआ है, शाम का समय है, रात का समय है, तारे टिमटिमा रहे हैं, लोकेशन क्या है, नदी है, नाले हैं, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, घर है, बेडरूम है, किसी होटल में है. So we try to assess through the poetry that what is the setting and what is the location of the poem. Good evening, Chandan. Pranam students. Yadav, practical criticism is for poetry genre only. No. Practical criticism is for poetry, drama, poetry, essay, anything. Because once you don't know anything, how will you assess it? So you have certain weapons with you. So what I am teaching you, it is basically the understanding to assess any poem or a drama or a prose or a poetry. So that you may be able to comment on it, speak on it and criticize or have a critical appreciation of it. And but the best part is used in poetry. Fine. Now, to understand the poem, we have to properly estimate the poet's intention and its outer meaning. हमें पोएम को समझने के लिए हमें पोएट का इंटेंशन समझना पड़ता है कि इस पोएम को क्यों लिखा है, हमारे माइंड में पीछे से क्या चल रहा होगा जिसके वजह से हमने ये पोएम लिखा, और उसका जो आउटर मीनिंग होता है वो हम समझ सकते हैं. क्योंकि किसी भी पोएट की आप अंदर की फीलिंग नहीं समझ सकते कि उसने अंदर में क्या लिखा होगा. वी कैन ओनली सर्कुलेट आवर थिंग्स इन द आउटर मीनिंग एंड द रीडर हैज टू इवैल्यूएट certain important questions while going through the passage. उस पैसेज को पढ़ने से हमारे अंदर कुछ क्वेश्चंस उत्पन्न होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप मान लीजिए कि जैसे आप कोई पोएम देख रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहे हैं, आपके मन में आएगा हु इज द स्पीकर, कोई बोल कौन रहा है, एंड whoever is the speaker is, वो किसको एड्रेस कर रहा है, who he or she is addressing to. ये पोएम जो है, गुड इवनिंग सायना खातून, गुड इवनिंग. Is it a drama? Is it a poetic drama? Is it mythological poem? Is it a love poem? A romantic poem? A threnody? A monody? A pastoral? An elegy? A ballad? Anything it can be. It can be even eclogue. So according to the assessment, we come out with certain things. लेकिन for example students, क्यों ये lecture बहुत important है? एक दिन be a part of a student. क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि अगर हमको नॉलेज ही नहीं है तो हम किसी भी चीज को एसेस कर ही नहीं सकते, हम लिख ही नहीं सकते. हमें पैस्टोरल का मीनिंग पता नहीं है, हमें इकोलॉग का मीनिंग पता नहीं है, हमें माइथोलॉजिकल का मीनिंग पता नहीं है, पोएटिक ड्रामा पता नहीं है, ड्रामा पता नहीं है, बैलेड पता नहीं है, थ्रेनोडी पता नहीं है. सो हाउ विल आई अंडरस्टैंड और एसेस दैट पोएम? वंस यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज टू मेक द सर्जरी ऑफ दैट पोएम. जैसे डॉक्टर के पास बहुत सारे औजार होते हैं सर्जरी के लिए, then he can do. But if in the same way, a literature aspirant, a lover of literature, a student of literature has to have a lot of weapons with him so that you can use those weapons in assessing that poem. And yes, images, metaphors, ये आपने पढ़ा होगा. Images, जब आप कोई poem पढ़ रहे होते हैं, so there are a lot of images which come into your mind by reading those lines. जैसे sun लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि yes, उस समय बहुत रोशनी है,
cloud, rain, the chirping of the birds, the lake Isle of Innisfree जैसे आप पढ़िए WBPSC की, तो आपको लगेगा शाम का मौसम है, birds chirping कर रही हैं, एक नदी किनारे पानी बह रहा है. So in the same way, images and metaphors, they play a long and a vital role in making the poet's message easy to understand. We are able to communicate, we are able to understand the poet's feeling when we understand the images and the metaphors which are used in the poem. And yes, the reader should try to perceive मतलब होता है देखना, the small images which are hidden and the objects that can be smelled. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो hidden होती हैं, जिनको हम केवल assess कर पाते हैं. जैसे मान लीजिए जॉन कीट्स की पोएम है. जॉन कीट्स is a wonderful poet for making your five senses feel. He is the only poet in the entire world who can make all your five senses come to limelight. And suppose it is a poem ode to Grecian urn or ode to the nightingale. So he is such a sensuous poet that you can even smell, you can even devour that. वो जो कौन सी उसकी लाइन है जिसमें उसने कहा है hemlock I have drunk. So this means कि जब hemlock का वो इस्तेमाल कर रहा है, we feel as if we are drinking that alcohol or hemlock. My heart pains and a drowsy numbness pains my sense as of hemlock I had drunk. So just feel the image as if we feel that we are drinking that and our purple stained mouth. ऐसा फील होने लगता है कि हमने उसको पी लिया और हमारा जो माउथ है वो रेड हो गया, पर्पल स्टेन हो गया. So are you able to understand students कि आप उसको hidden images को स्मेल कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कौन सा एज में है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एज नहीं होता है बेटा. ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हैज नथिंग टू डू विद द एज. फाइन. सो द रीडर शुड ट्राई टू परसीव, smell the hidden images and the objects that can be smelled, it can be seen and it can be fed or even tasted. जैसे आप कीट्स की पोएम में आप बागीचे में घुस जाइए तो आपको फील होगा उसकी पोएम पढ़ करके that there are many flowers all around. And there are innumerable examples of such kind of poetry where we get beautiful imageries, we get smell, we get taste, we get sensuous images in the whole range of poetry of different ages. Maybe Spenser, maybe Keats, maybe Wordsworth, maybe Robert Frost, maybe Philip Larkin, maybe Ted Hughes, maybe Walt Whitman, maybe Wallace Stevens, maybe any poet if they have their own system. John Donne, yes, lot of sensuousness. Then the reader can judge a piece of art by perceiving whether certain images are repeated in the poem. Students, these are very important things. So just have a very too much concentration on this lecture, that you have to understand that there is one image. Suppose here Sanjeev Kumar, खुश रहिए Sanjeev Kumar. I am so thankful to you that you are happy with this lecture. God bless you. So students, हम एक्चुअली में क्या है कि आज ये जो लेक्चर है ना, this will actually make you understand that what you are actually missing in life. And believe me students, if you are able to follow my guidance and if you dream that peak of Mount Everest in the field of English literature, you can become and you can go to that Mount Everest और वहाँ पे आप अपना जय भारत का झंडा गाड़ सकते हैं, which my students have been doing pan India since 21 years. बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए, मेरे अंदर तो है ही है. And with that passion only, with that energy only, and with that feeling of help all over India students, so that they may be able to assess that हमें पढ़ना कहाँ है. हमारे पास बच्चों रोज फोन आता है कि सर हम कहाँ पढ़ें. हम उनको सिर्फ एक जवाब देते हैं स्टूडेंट्स कि जहां पे आपको कनेक्टिविटी लगे, जहां पे आप प्रोफेसर के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो दिल से दिमाग से, तब आप वहां पढ़िए. एवरी टीचर इज अ गुड टीचर, बट यू शुड बी कनेक्टेड विद हिम फ्रॉम द हार्ट एंड सोल एंड माइंड. एंड OSN Academy is a temple of education. इसका नाम ही है ओम साई नमा. So we are followers of Sai Baba, and with this blessings of God that I have established this academy as one of the premier academy in the country for IAS and UGC NET or any other competitive exam for literature. So मुझे बड़ी खुशी है students. Good evening sir. Kindly provide one's detailed history of English literature. Thanks Prajapati.
रविंद्र, प्रणाम प्रणाम रविंद्र, हाउ आर यू रविंद्र? प्रजापति, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का डिटेल चाहिए, ये नंबर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप कर लीजिएगा. आई विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग. एंड इफ यू आर अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट और पीजीटी एस्पिरेंट, एनी एस्पिरेंट, you just talk to me, you just WhatsApp me, I will guide you everything. Now again coming to the point, मैं कहाँ पे था? Yes, the reader has to judge that piece of art, the poem, by perceiving, देख करके, poem को पढ़ करके, whether the images are repeated in the poem or not, and is the poem written in a traditional pattern. Traditional pattern का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो पारंपरिक पुराने जमाने से जो पैटर्न चला आ रहा है, क्या उस पैटर्न में ये पोएम लिखी गई है? क्या ये पोएम इनोवेटिव पोएम है, कॉन्टेम्पररी पोएम है, कि नहीं यार ये पोएम जो है ना ये पुराने जमाने की नहीं लगती, बड़ी कॉन्टेम्पररी लग रही है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप पोएम पढ़िए वॉलेस स्टीवेंस की, जैसे आप पोएम पढ़िए एमिली डिकिंसन की, जैसे आप पोएम पढ़िए वॉल्ट व्हिटमैन की. सो दीज पोएट्री, whether of Emily Dickinson, Wallace Stevens, Walt Whitman, they have a different pattern. They become a lot, you know, it is not very easy to understand Emily Dickinson or even Walt Whitman, क्योंकि उनमें कोई राइमिंग नहीं है, स्पेस है, कोलन्स हैं. You are not able to adjust them with proper as you adjust yourself with Milton or Donne or Wordsworth or Frost or you can say these Chaucer, Spenser, anybody. So these poets are traditional, but you have many innovative poets also, many systems. And how the poem is in a progression mood, किस प्रकार से पोइट्री प्रोग्रेस कर रही है और उसके अंदर कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं. और डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं. जैसे 14th सेंचुरी से पहले हमारे यूजीसी नेट स्टूडेंट जब हमारे क्लास में एंटर करते हैं, जो हमारी पर्सनल क्लास है जो चल रही है, 2-2 बैच चल रहा है स्टूडेंट्स, और अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं, अपने को एक्सेल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिएगा. उसमें आप सब कुछ पढ़ाई करते हैं यूनिट 1 से यूनिट 10 तक. तो हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में बताया है कि एक पोएम है, याद करिए, उसमें है P.S. the Plowman. P.S. the Plowman. P.S. the Plowman was written in alliteration, alliterative words. जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चचाई. तो व्हाट इज दिस? चा 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 चा. सो दिस इज कॉल्ड इन हिंदी alliteration. इसी तरह इंग्लिश में होता है. सो इफ यू फाइंड समथिंग लाइक, अरे ये पोएम में तो alliteration दिख रहा है, सेम साउंड, सेम कॉन्सोनेंट रिपीटिंग, इमीडिएटली आप लिख सकते हैं, ओके, the poet has used alliterative verses or he is used the rhyming schemes. आपको rhyming scheme के बारे में पता होना चाहिए. ABCDA जो भी होता है, स्पेंसरियन स्टाइल, अलेक्जेंडर स्टाइल. एंड इज द टोन ऑफ द पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिएगा कॉपी में. क्या जो हमारी पोएम है उसका जो टोन है वो फॉर्मल है, प्लेजेंट है, बहुत हार्श है? हार्श का एग्जांपल मैं देता हूं आपको स्टूडेंट्स. जॉन डन की पोइट्री है जिसमें उसने लिखा है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी जिससे उसको प्यार है, वो ऐसे बोलेगा? क्या ऐसे बोलेगा? फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव. कोई ऐसे प्यार करता है क्या? नो. इट इज अ हार्श पोएम बट इट इज अ कोलोकियल पोएम. लेकिन कोलोकियल होकर के भी कोई ऐसे बोलता है क्या? सो नो, जॉन डन वाज नोन फॉर इट. सो इसको कहते हैं हार्श टोन. So is the tone of the poem very formal? जैसे आप डायरेक्टर से मिलते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनसे आपका रिलेशन फॉर्मल है, तो पोइट्री भी फॉर्मल होती है, पोइट्री भी प्लेजेंट होती है, पोइट्री हार्श होती है, पोइट्री इमोशनल होती है, पोइट्री अथॉरिटेटिव होती है, क्वेश्चन मार्क होता है. एंड देयर आर सर्टेन अदर मेजर्स थ्रू व्हिच वी कैन जज अ पीस ऑफ वर्क. बहुत सारे पोएम्स को हम बहुत सारे मेजर्स पे तय कर सकते हैं. And again, we can also see the poem taking into account some effects. बहुत सारे effects हम पोएट्री, जब जो पोएट्स होते हैं, जैसे मैं भी पोएट्री लिखता हूँ, मैं भी पोएम्स लिखता हूँ, और कभी मौका रहा तो मैं आपको कुछ अपनी लव पोएम्स, कुछ अपनी नॉर्मल पोएम्स, कुछ फिलोसफिकल पोएम्स पढ़ के सुनाऊंगा. You will actually enjoy my poems which I have written long back. So taking into account some effects, जैसे imagery, for example, just hold on students. संदीप वर्मा, गुड इवनिंग सर. अमित गुप्ता सर, आई एम योर ऑनलाइन स्टूडेंट सर. प्लीज थोड़ा इजी वे में बताइए. अरे अमित, मैं आपको यहाँ पे अमित गुप्ता के नाम से नहीं पहचान पा रहा हूँ.
तो क्या मुझे आप बता पाएंगे कि आर यू इन माई यूजीसी नेट बैच? क्या आप मेरे यूजीसी नेट बैच को ज्वाइन किए हैं? और प्लस हम तो बहुत इजी समझा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसको कठिन लग रहा है थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि हम देखिए इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बता रहे हैं, दो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल ट्रांसलेटिंग इंग्लिश लिटरेचर इनटू हिंदी, बट आई एम डूइंग so that some of the students who don't understand that level, they may be able to get a lot of knowledge and lot of help from this class. Yes, we can see in a poem which the poet is taking account some effects, and what are those effects, students? पहली हो गया imagery, allusions, paradox, hyperbole, irony, and litorts. So many other things are there. Poetry can be easily distinguished from prose. किन चीजों से? By rhyme और by rhythmical arrangement of words. हम तुरंत क्यों समझ जाते हैं कि ये प्रोज में है, ये प्रोज में है, या ये पोइट्री में लिखा हुआ है? बिकॉज उसका जो रिदमिकल अरेंजमेंट है वो हमें क्लियर कर देता है. नीतू साहू, नीतू यू बिलोंग टू विच सिटी? नीतू आप किस शहर से बिलोंग करती हैं और आपने कब ज्वाइन किया है? यस, हमें याद तो आ रहा है कि आपने ज्वाइन किया है, बट जस्ट सिटी बताइए मुझे. सिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी? यस, so poetry can easily be distinguished from prose by rhyme or by the rhythmical arrangement of the words, and poetry has been classified into 3 types. 3 प्रकार की पोइट्री को क्लासिफाई किया गया है. कोई स्टूडेंट बता सकता है? जौनपुर. नीतू साहू आप जौनपुर से हैं. आपने कब ज्वाइन किया है नीतू हमारी क्लास को? हमारी यूजीसी नेट क्लास को कब ज्वाइन किया है? डेट बता सकती हैं? Yes, students, poetry has been classified into 3 types. 3 टाइप्स की पोइट्री को क्लासिफाई किया जाता है. पहला है, देखिए मैं लिख देता हूं बड़े से, एपिक. पहला है एपिक, दूसरा है ड्रामेटिक, और तीसरा बताइए? ड्रामेटिक, और तीसरा है लिरिक. अच्छा, यस नीतू, पोइट्री क्या? अब आप समझे बेटा कि पोइट्री जो है हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. पहला एपिक, दूसरा ड्रामेटिक, एंड तीसरा लिरिक. एंड यू आल्सो बी नोइंग, एंड फ्यू मस्ट नॉट बी नोइंग, दैट दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज sonnets, as ode, as elegy, etc. according to their mood, according to their purpose. हमारा जैसा मूड है, हम जैसी पोइट्री लिखना चाहते हैं, जो हमारा पर्पस है, इसके बाद हम इनको फर्दर और आगे बाइफर्केट कर देते हैं. एंड फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट, न जाने किस जमाने से पोइट्री इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ हायर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. इसीलिए कहा जाता है कि पोएट्स आर नियर टू गॉड. क्यों? क्योंकि इनका जो पोइट्री का या पोएट्स का जो दर्जा होता है वो बहुत हाई होता है. इसीलिए पोइट्री को हमेशा कहते हैं इट इज अ हायर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंपेयर टू प्रोज और एनी अदर जॉनर. प्रोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सॉर्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस होता है, जो कि आप किसी भी नॉवेल में, किसी भी ऐसे बुक में नॉर्मली जो होता है उसको हम कहते हैं prose. Now students, I will discuss something about इसको हम खत्म करते हैं कि देखिए ये था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर इस पे आपने वर्किंग कर ली और अगर आप हमारे क्लास में हैं या आप ज्वाइन करते हैं कल को, so you will be, मतलब there is no doubt about it that you will be one of the best scholars in the country in the field of English literature. Now I am coming to rhetoric. Why rhetoric is important? आप rhetoric वर्ड से क्या समझते हैं? Rhetoric, R-H-E, rhetoric. Why rhetoric is important? Rhetoric is not just empty words or fine political speeches, जैसे नेता लोग भाषा देते हैं, एक से भाषा देते हैं, लोग ताली पीटते हैं. It is not just empty words or fine political speeches. It is
the study and art of writing. ये एक कला होती है, ये एक साइंस है, ये एक विद्या है, ये एक कला है राइटिंग की, स्पीकिंग की well. If you want to study, if you want to write well, if you want to speak well, you have to have the art and the knowledge of rhetoric. So it is a study on art of writing and speaking well, being persuasive and knowing how to compose successful writing and how to compose successful presentations. You have, if you want to create a wow feeling, you have to have the knowledge of rhetoric. And rhetoric teaches us the essential skills of advanced learning and higher education. And in rhetoric classes, students learn to think logically. Logically, सोचना समझना हमें आ जाता है जब मुझे rhetoric आता है. And to discover wrong or weak arguments, to build a good case on a very controversial topic, and to overcome the all too common fear of speaking in public, so that they can deliver very crisp and well prepared speeches. आपने देखा होगा कि these motivational speakers, आपने देखा होगा कि जो माइक में कंपेयरिंग करते हैं, why they are able to make you laugh, why they are able to present good humor, why people clap, why you become a fan follower of anybody speaking good in English, because they are well versed in rhetoric. They have a lot of knowledge how to use, where to use, how to express with that coinage of the words where it is used. हम जब जहां चाहें जैसे चाहें उस वर्ड्स को फिट कर लें, उसको खूबसूरत बना लें और उसको दिल तक हम ऐसा पहुंचा दें कि आपको लगे कि वाह क्या बोला है. So that is called rhetoric. So it's very easy and very clear explanation and very convenient English where we can improve our speaking skills also. Yeah, Sujata, I've been getting a lot many calls always कि sir please teach us online spoken English. But because of shortage of time, I am unable to do so. I want to teach thousands and thousands of students, especially this क्या कहते हैं इसको spoken English with proper grammar and how to speak English, how to basically that the grammar portion will be less, but how to speak English will be more. So it was always my dream, and I long back I used to teach this communication, you can say, and the spoken classes. But due to shortage of time, I am not able to. Let's hope कि कल को मौका लगा और बच्चों ने कहा तो maybe I'll be able to teach you all. So yes, so these well prepared speeches, and to create a wow feeling, you have to have a knowledge of rhetoric. And rhetoric is a fundamental building block of good education, where it is followed by studies of engineering, English, or you can say entomology, clear thinking, good argument, logical discussions are essential, very essential to academic students' process and success in any discipline and field. All students who are watching me and will be watching always this video in the form of recording, always understand one thing, that from the day one you have to have the knowledge of speaking English to be confident in front of the public, in front of the students where you are going to teach, and in front of the professors where you will be facing the interview. And yes, I can assure you this thing, that when you listen my 50, 60, 70, 80 hours of lectures continuously in my 6 months classes, automatically your English becomes so sound, because you have to have a listening ear. अगर आप सुनेंगे नहीं अच्छा तो कैसे बोलेंगे, कैसे नॉलेज इकट्ठे होगी आपकी. So UGC नेट तो छोड़िए, even if you are a student of English literature of any level, and if you get my proper classes online, you are improving yourself to that level of excellence. So that is called, this is known as OSN Academy, where you are excelling in the field of literature and your own English. Yes, and the better the essays you write, जितना अच्छा आप essay लिखेंगे, the better you get the grading. And yes, if my IAS aspirants, if IAS PCS aspirants are listening my voice here, it will be very helpful for you, because in IAS examinations where you are writing MA English or BA English, rhetoric is very important. Unless and until you will not snatch marks from the professor's hand. And how will you snatch? Only by the help of
the first topic which I have told you, the practical criticism, and even more important is rhetoric. So you have to compete with the world. So the better you write, the better you portray, the better feeling you give. And in IAS answers, you have to be very spontaneous. You don't have to be writing the gaudy answers with a lot of verbosity. No. The stronger the presentations you make, the greater your academic success. Fine, students? Ravindra, start thinking is the key of yes. Rhetoric is the key or methodology of literature. And in इसी तरह से अगर इसको हम ऐसे कह दें कि rhetoric is the key to your success. With this, I take my rest with my words here, and with one thing I would like to assure you this thing, that students, don't waste your time in luxuries of life. Don't waste your time in thinking process. If you are going to make your career, get up, plan something good, and do what I say. Study English and just become the hero of your family and the hero of your own self by proving the world that yes, I am something, and you will be proud that yes, you are a student of Dr. Agrawal, who helped you so much, who gave you so much guidance of the entire, not only for the entire literature course, but as a person, because as a literature student, you have to understand the society, the people, the whole world around you. So literature makes you understand the society at large. So be a good human being, be a good literature student, and then win the race. With those words, God bless you. And yes, Preeti Chaturvedi, it's quite comprehensive and interesting too. This is good that you said it, that yes, you liked it, Preeti. And if you are a NET aspirant or any literature aspirant, I would say that you can be a part for your success if you wish so. So with those ends, God bless you, good night, and we will meet you further. और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या जो करना चाहते हैं, इसी तरह से हम पढ़ते हैं, इसी तरह से हम पढ़ाते हैं. कोई भी चैप्टर्स हो, कोई भी चीज हो, पूरा वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ेंगे, with cross questioning, with doubt sessions, with test series, everything, and then you can see your result. Thank you so much, students. Good night. Hello.